गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मैं प्राची आपके लिए एक अलग सेगमेंट, एक अलग टॉपिक लेके आई हूँ रिसर्च मेथडोलॉजी का, जो कि ना सिर्फ आपके यूजीसी नेट के लिए यूज़फुल है, बल्कि हर वो आदमी जो ये सोचता है कि हम एक रिसर्च पेपर लिखते हैं। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट वी ऑलवेज थिंक दैट लेट्स राइट अ रिसर्च पेपर, लेट्स राइट अ रिसर्च आर्टिकल. So what is something which makes your research article or your research paper stand different with respect to other research papers? तो आज हम डिस्कस करेंगे कि what is the basic syntax which is used in and which are followed by the people and academicians. तो रिसर्च पेपर का जो डिज़ाइन होता है और जो आउटलुक होता है वो लगभग इस तरीके का दिखता है. सबसे पहले आपका होगा टाइटल ऑफ द पेपर. नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑलवेज चूज़ समथिंग जिसमें कि आप नॉलेज जनरेट कर रहे हो. आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट का बात नहीं कर रहे हो. वॉट एवर इज़ देयर इन पब्लिक डोमेन is known by everyone. So we be writing a research paper would want to give to the society something different, something useful to the society. ठीक है. तो आपका जो रिसर्च का जो टॉपिक होगा, ठीक है, उसको हमको ऐसे टॉपिक को चूज़ करने का कोशिश करना है जिसके बारे में मतलब देर इज़ अ डायलेमा वेदर दिस स्टैंड इज़ क्लियर और दैट, जो बोलते हैं ना कि ग्रे एरिया ऑफ लॉ और ग्रे एरिया ऑफ सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट. तो वो चीज़ को हमको चूज़ करना है. नाउ वी हैव टू से whether what is the problem which is existing in that particular sphere. ठीक है. तो आप कैसे मतलब रिसर्च का आप जब डेफिनेशन पढ़े होंगे तो यू मस्ट हैव रियलाइज कि रिसर्च का मतलब क्या होता है. केयरफुल एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, and when you are doing that investigation or inquiry in that particular area, you are trying to put in and trying to get new facts, new theories. You want to develop new theories, that generalization which has to be achieved by you. ठीक है. तो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम जब तक नहीं जानेंगे, आप प्रॉब्लम नहीं जानेंगे कि किस चीज़ पर आपको वर्क करना है, तो आप आगे का स्टेप्स अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएंगे. जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है रिसर्च क्वेश्चन का. तो आप जब प्रॉब्लम देख लिए, देन यू विल बी एबल टू रिकग्नाइज व्हाट आर योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, व्हाट आर योर डिपेंडेंट वेरिएबल्स. Let's take an example so that you get clear about what are those variables. So basically when we talk about awareness of women's right, I have taken that example in awareness of women's right, and my sample size, taking the sample size is middle teenage girls, middle class girls, middle aged women and old aged women, and I want to know whether awareness of their women's right is there in these group of people according to the teenage group or not. So this is something which is my objective in this study. So my sample size is decided. Teenage girls say I would be taking some girls and I would be interviewing. So now the problem I have recognized कि चलो प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता ही नहीं कि उनका राइट कैसे है, तो वो इन्फोर्स कैसे कराएंगे. जब वो राइट को इन्फोर्स नहीं कराएंगे तो हम वुमेन एम्पावरमेंट का ऐसे किताबों में बात करते हैं, वो रियलिटी कैसे होगी, एक्सप्लॉयटेशन कैसे रुकेगा. ठीक है. तो अभी हमको प्रॉब्लम भी पता चल गया. बेस्ड ऑन दिस, बेस्ड ऑन द अवेयरनेस आपका हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया आपका एजुकेशन, अट्रॉसिटीज़ ऑफ वुमेन, क्योंकि अवेयरनेस नहीं होगा तो अट्रॉसिटीज़ ऑफ वुमेन होगा. तो इसके ऊपर जो चीज़ें डिपेंडेंट हैं वुड बी योर डिपेंडेंट वेरिएबल. तो बेस्ड ऑन दैट आई वुड फ्रेम क्वेश्चंस. सो व्हाट वुड बी माय क्वेश्चन इन दिस केस? हाउ फार suppose how far the women of different age groups know about their rights. Maybe this could be my research question. Likewise I will frame research questions. After that, hypothesis comes. Hypothesis is basically a presumption which a researcher makes before going to the main body and before opting for any research methodologies. So for this case, maybe I would take this hypothesis that I think teenagers know more about their rights than the old women because they are less aware and they are not prone to getting aware from television and other sources.
So teenage people know more about their rights. Maybe this is my hypothesis. So this is basically a general idea which I have, which I want to test in my research paper, and then I would arrive at a conclusion. So after writing my research hypothesis, I would come down to research methodology. So in this case, if I take a field survey and give a questionnaire to the people, and if the questionnaire is such that the answers are not very subjective, it would be a very structured questionnaire, and then only tick the boxes are there. So then that would be a quantitative research methodology. When I actually want to know in depth what is the reality, then that would be a qualitative research, in which I would use interviewing techniques, interviewing methods, so that according to what you want to achieve, your research methodologies is dependent on that. Now after that, let's come to objective. Objective is something which which is your ulterior motive to achieve after you complete your research. So that would be your objective. After that, scope. Every research paper should have scope, because you cannot research upon anything and everything. You have to restrict your research on certain limits. So that boundary you have to write in scope. After that, you have to go for chapterization. Chapter 1 says this, chapter 2 based on the titles of subheadings you can chapterize, and then finally you come to the conclusion. So this is basically the structure of your research paper. Thank you.